Hello everyone, welcome to today's session. In today's class, we'll be discussing various methods of sampling which are there in the chapter Collection of Data, Class 11 Statistics. Now, if we broadly classify, there are two types of sampling techniques. First is random sampling and second is non-random sampling. In random sampling, there are two methods. First is simple random sampling. Second is restricted random sampling. And restricted random sampling is further classified into four: stratified random sampling, systemic sampling, cluster sampling, and multi-stage sampling. Whereas non-random sampling is being classified into three: judgment sampling, quota sampling, and convenience sampling. Now let's discuss these methods of sampling in detail. Now the first type of sampling method is random sampling. Random का मतलब क्या होता है? बाय चांस कुछ भी चूज कर लीजिए, है ना. रैंडमली पिकअप करना मतलब आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट पिकिंग अप द आइटम्स फ्रॉम द यूनिवर्स जस्ट बाय चांस. सो द मीनिंग ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज, this method refers to a method in which every item in the universe has an equal chance of being chosen from the sample. For a sample means कि आपके जितने भी टोटल आइटम है यूनिवर्स में, आप कुछ भी रैंडमली पिक करके एक सैंपल डिजाइन कर सकते हैं. द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम इज इंडिपेंडेंट of the person making the study. मतलब the person who is actually collecting the sample, he is unbiased, so he can choose any item from the universe as a part of the sample. This is also known as probability sampling. There is no room for discrimination in random sampling. Random sample is a replica of a universe, and measurements of such a sample can help us to estimate the measurements of the population. अब क्योंकि हमने रैंडमली आइटम पिक किए होते हैं सैंपल डिज़ाइन करने के लिए, तो जो सैम्पलिंग का रिजल्ट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है पूरे यूनिवर्स का. So this method help us to estimate the measurement of the population. Simple random sampling, which is known as unrestricted random sampling. A simple random sample is one in which every item of a population has an equal chance of being selected. मतलब simple random में का मतलब है आपने कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स कर रखा कि लेट्स से रोल नंबर 1, then roll number 3, then roll number 5, then roll number 7 are going to be picked up from the class for making a sample. या even roll numbers are going to be picked up. ठीक है, आप simple random sampling में each and every item of the population has an equal chance of being selected. This method is known as unrestricted random sampling, as a method of selection shall not favor one item or the other. Under this method, a sample is selected by the following two methods. First is lottery method. आपको पता है lottery में you just put the chits into a basket, pick up any chit. That means each and every item of the total population has an equal chance of being selected in the lottery method. And second is use of random number tables. Now these are the tables which are already prepared. Already prepared होती है तो आप क्या करते हो, अपने आइटम को नंबर दे देते हो. ठीक है, नंबर अलॉट करने के बाद रैंडम नंबर टेबल में जो नंबर दिए हुए हैं, जस्ट यू पिक अप दोज नंबर्स, तो ये आपका सैंपल बन जाता है. The popular tables of random numbers are Fisher's and Yates tables, M.G. Kendall and B.B. Smith table, and Rand Corporation. Or see, ये tables, don't go into the details of this table.
ये tables क्या हैं? Like let's take one table, Fisher and Yates table. This table consists of 15,000 random digits written in the form of 1500 group. तो आप कोई भी नंबर इनमें से पिक कर लेते हो randomly and then जिस जो आइटम नंबर पे वो नंबर लिखा होता है that item is being selected as a part of the sample, and this is being done in other table of random numbers. Now, merits of simple random sampling is that no personal bias, every item of the population has an equal chance of being selected. So selection of various items in a sample remains free from personal bias of the invigilator. Second is, it is based on probability. Due to random character of sample, the rules of probability are applicable. I think you all are math students. You know how, what do we mean by probability? Probability means the chance of selection. So due to random character of the sample, the rule of probability is applicable and there is an equal chance of each and every item of being selected in the sample. Then accuracy can be assessed. The analyst can easily assess the accuracy of this estimate since it is possible to estimate the magnitude of sampling errors in the result obtained from a random sample. Fourth merit of simple random sampling is increasingly representative of the population. ये अभी हमने इसके मीनिंग में भी पढ़ा था कि जो सैंपल बेटा हमारा डिजाइन होता है वो हमारे पॉपुलेशन को इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंट करता है, मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा. रीजन यही है क्योंकि हम जो सैंपल बना रहे हैं उसमें हम जो आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं. इसके अंदर पर्सनल बायस जो है इन्वेस्टिगेटर का वो इन्वॉल्व नहीं है. आई होप द मेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Let's come to the demerits of simple random sampling. The first demerit is that it is unsuitable for small sampling. If the sample is not sufficiently large, then it may not be representative of the population and thus may not reflect the true characteristics of the population. मतलब अगर population size बेटा बहुत large है, maybe in crores, and you are just having a sample of 100 items, so that sample will not be a representative of the true population. तो उस केस में जो सैंपल का रिजल्ट आएगा वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. Then second demerit is that it is difficult to prepare sampling frame. The selection of a random sample requires the preparation of a sampling frame which may be difficult for a large or an infinite population. The same, देखो जो second demerit है वो first से ही related है कि अगर मेरा population का size बहुत infinitely large है तो कितना सैंपल, कितने आइटम का सैंपल बनाएं कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन बनेगा, इसको डिसाइड करना मुश्किल होता है. एंड थर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग. द नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स and the preparation of the slip is quite time consuming and uneconomical, especially when population is large. Again the same point related to the first two कि अगर population का जो size है वो large है तो sample को बनाना time consuming भी होता है, uneconomical होता है, fine, and it takes a lot of time to prepare the sample. सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है बेटा कि हम कोई सर्टन क्राइटेरिया, वी अडॉप्ट सर्टन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. Demerits of simple random sampling is that the selection of a simple random sample is appropriate when different items of the population are homogeneous. सबसे पहले अगर तो population की सारे items homogeneous हैं तब तो हम simple random sampling पे जाएं, लेकिन अगर population की सारी items homogeneous नहीं हैं, different हैं, heterogeneity ज़्यादा है उसमें, different slots ज़्यादा हैं, fine, लेकिन आप let's take an example of population of India. Are the population of India, is the population of India homogeneous? No.
you can divide the population of India into various terms. बहुत heterogeneity है. There are different no culture. आप पॉपुलेशन को कल्चर के से भी डिवाइड कर सकते हो. आप पॉपुलेशन को देर आर डिफरेंट रिलीजन्स विच आर फॉलोड इन इंडिया, आप उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो. देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन इंडिया, तो आप पॉपुलेशन को उसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो. सो इन सच when the population size is large and there is heterogeneity, मतलब सेम नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो उस टाइम पे simple random sampling will not give the true result of the whole population. उस केस में we adopt restricted random sampling. और जो important restricted random sampling के methods हैं, they are stratified random sampling, seismic sampling, cluster sampling and multi-stage sampling. Stratified random sampling. In this method, the universe or the entire population is divided into a number of groups or strata, and then certain number of items are taken from each group at random. Its basic purpose is to ensure that all the characteristics of the heterogeneous population are adequately represented in the sample. It also helps in increasing the accuracy of the result of investigation. देखिए सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज सी इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, है ना. मुझे अगर पूरे इंडिया की सर्वे करना है तो मैं क्या करूं? अगर तो मैं हर एक हाउस होल्ड के पास जा रही हूँ, इंडिविजुअल के पास जा रही हूँ, देन दैट सर्वे इज गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम, मे बी ईयर्स टू कंप्लीट. लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आई नो दैट द होल कंट्री इज बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, तो मैं स्टेट्स में से कुछ कुछ सैंपल पिक कर सकती हूँ एंड देन आई कैन कंडक्ट माई इंक्वायरी. So it helps in increasing the accuracy of the result of investigation. If क्योंकि देखिए स्टेट में एक डिफरेंट कल्चर, सेम सेट ऑफ पीपल होते हैं, सेम रिलीजन, ऑलमोस्ट सिमिलर रिलीजन, या द सेम लैंग्वेज दे हैव, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द हेट्रोजिनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, द होल पॉपुलेशन इज बीइंग डिवाइडेड, और हम फिर हर हेट्रोजिनियस ग्रुप में से कुछ कुछ आइटम्स पिक करके सैंपल को डिजाइन करते हैं. दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड का मतलब, स्ट्रेटिफाइड वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेटा. स्ट्रेटा का मतलब ग्रुप. फाइन. Merits of stratified random sampling are, it is more representative. Since the population is first divided into various strata and then every group gives a representation in the sample, a more representative sample is obtained. Second is greater precision. There is a greater accuracy under this method as variability in each stratum is reduced to a considerable extent under this method. Third merit is administrative convenience. It ensures administrative convenience by dividing the population into certain homogeneous strata and substrata. And the fourth point of merit is greater geographical concentration. The units from different stratas may be selected in each way that all of them are localized in a particular geographical area. This helps in reducing the time and expenses of taking the interview. अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज अगर मुझे इंडिया का पूरा पॉपुलेशन से सैंपल इफ सैंपल मेरे को कलेक्ट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं हर एक हाउस होल्ड या हर एक इंडिविजुअल के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से अच्छा है कि मैं कुछ एक इंडिविजुअल्स आई शुड सिलेक्ट फ्रॉम ईच स्टेट, बिकॉज ईच स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग नो डाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ इंडिया in its own unique way. So I can divide the whole country into different states. स्टेट्स में से मैंने आइटम्स पिक किए और अपने सैंपल के अंदर इंक्लूड कर लिए. सो सच सैंपल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. Demerits of stratified random sampling is, it is difficult to determine the size of the strata. सबसे पहली मुश्किल बात ये हो जाती है बेटा कि हम जो जब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं तो साइज क्या रखें सैंपल का.
Second demerit is requires utmost care. Under this method, item from each strata are selected at random. If care is not taken in the random selection, this method does not become successful. And finally, it is more expensive. The stratified samples are likely to be widely distributed geographically, so it may prove to be more expensive in the matter of collection. Now let's come to the second method, that is seismic sampling. Under this method, out of complete list of available population, a sample is selected by taking every nth item from this list. Let's take the example कि every nth item का मतलब क्या हुआ? If a population contains 20,000 items, ठीक है, and a sample of 40 items is to be taken. So if we divide 20,000 by 40, fine, the selection of every 50th item will give the required sample. The selection of every 50th item will give the required sample. So assumption is a complete list of population under study is available, and in order to obtain a reliable and accurate results, it is necessary that a list of arranged wholly at random is being maintained, and the other name for your seismic sampling is quasi random sampling. Fine. Merits of seismic sampling is that it is simple and convenient. आपने कुछ नहीं करना, सब ना, आपने सपोज 20,000 आइटम थे, मुझे 40 का सैंपल चाहिए, मैंने हर सिर्फ 50th आइटम को मैंने उसको उसमें आइटम्स को अरेंज कर देना और हर 50th आइटम को पिकअप करते जाना है. सो इट इज सिंपल एंड convenient, it is less time consuming, and it gives satisfactory result. On the other hand, the limitations of systematic sampling is that it's biased results in case of periodic features. The result of a systematic sample can be very misleading if there is periodicity in the data. For example, if 50th, 100th and 150th, etc. person belong to the same income group, then the average income thus obtained, then the result will be unrealistic. है ना, मतलब कि अगर आपने जब उसको डिवाइड किया है इस तरीके से, आप रैंडमली पिक कर रहे हो और सैंपल में जो आपके पास आइटम आई दे आर होमोजीनियस, है ना, वो सेम ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग करते हैं या सेम रिलीजन को वो लोग बिलोंग करते हैं या सेम मीन्स देयर इज सम सिमिलैरिटी in the items which are being collected by this method in this sample, then it is going to give us biased result. The second limitation is that possible only when complete list is available. हम ये मेथड तभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब हमारे पास सारी के सारे पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल. It is unsuitable in case of large population. Means it is not suitable for a large size universe. For that, it will be very difficult to prepare the sampling frame कि कितने का sample हम prepare करें. Next is cluster sampling. Under this method, total population is divided into some recognizable subdivision known as cluster. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को सब डिविजन में डिवाइड कर लेते हैं जिनको हम क्लस्टर कहते हैं. देन आउट ऑफ ऑल क्लस्टर a given number of clusters are chosen at random and all the items covered by the selected clusters are included in the sample. See, for example, हमने क्या किया, there are 20 items, ठीक है, 20 items को हमने 5 clusters में divide कर दिया. जब 5 clusters में divide किया यानी कि each cluster is having 4 item, तो मैंने क्या किया, 5 clusters थे, मैंने cluster number 1 के सारे item, cluster number 3 के सारे item और cluster number 5 के सारे item को include कर दिया अपने sample में. So this is what cluster sampling is. Suppose we are interested in obtaining the income status of household of rural area in Uttar Pradesh. If there are about 100 villages, then obtaining a list of all the household may be difficult. तो हम cluster method में क्या करते हैं, it's possible to divide these 100 villages into different clusters such as they are homogeneous between
themselves, like by including some villages which are economically weaker, some with a sound economic background. So if 15 clusters are formed in this manner, then out of these clusters we can select some clusters, say 2 clusters as at random. लेकिन जब हम 2 clusters को select करेंगे ना बेटा, तो उन 2 clusters में जितने सारे हाउस होल्ड हैं उन विलेजेस में, वो सारे के सारे मेरे सैंपल में इंक्लूड हो जाएंगे. This is what cluster sampling is, and it is different from stratified sampling. Cluster should be as small as possible, consistent with the cost and limitation of survey, and the number of sampling units in each cluster should be approximately same. So cluster sampling is uh, not to be recommended if we are sampling area in a city where there are private residential houses, business and industrial complexes, apartment buildings, etc., with widely varying number of persons or households. Next is your multi-stage sampling. अब multi-stage sampling क्या होती है? ये extension होती है cluster sampling का. It is carried out in multi-stage, say 2 or 3 or 4 stages. अब पहले stage में हम क्या करते हैं? The universe is divided into some cluster from which certain clusters are selected at random at the first stage of sample. हमने क्या किया? पहले सारे यूनिवर्स को लेट्स से 5 क्लस्टर में डिवाइड कर लिया, और 5 क्लस्टर्स में से मैंने पहले 3 क्लस्टर्स सिलेक्ट कर लिए, क्लस्टर 1, 3 एंड 5. पहला स्टेज खत्म. सेकेंड स्टेज में क्या होगा? The selected first stage samples are again subdivided into small clusters, from which again certain clusters are selected at random as the second stage of sampling. अब जो मैंने clusters लिए थे उनको combine करके again एक population बना दी. अब उसमें से फिर clusters form किए, and then few clusters are being selected. In the third stage, the selected second stage samples are again subdivided into small clusters, from which certain clusters are again selected at random at the third stage of sampling. For example, in an urban inquiry, a sample of town may be taken at first. Then from each of the selected towns, a sample of household may be selected, and then if necessary, from each of the selected household, a third stage sample of individual may be taken. यानी कि आप सैंपल में से ही क्लस्टर्स बनाते जा रहे हो और क्लस्टर्स के साइज को और रिड्यूस करते जा रहे हो. Next is your non-random sampling. Under non-random sampling method, the selection of a sample depends on the judgment of the investigator rather than by chance. देखो random में क्या था? Randomly आप pick कर रहे थे, उसके अंदर personal bias of investigator was not and all involved. लेकिन non-random sampling में investigator की judgment to some extent involve होती है. This method does not provide every item of the universe with a known chance of being included in the sample. क्योंकि नॉन रैंडम है, बायसनेस, थोड़ा सा जजमेंट जो है इन्वेस्टिगेटर का इन्वॉल्व है, इसीलिए हर जो आइटम है यूनिवर्स का उसका इक्वल चांस नहीं होता ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. If the investigator is unbiased and intelligent, the selected sample may be more representative of the population than the random sample. But non-random sample method is not scientific, so various laws of statistics cannot be used to analyze it. Various non-random sampling methods, as we have discussed, was the judgment sampling, quota sampling, and convenience sampling. Judgment sampling is known as purposive sampling and deliberate sampling. Under this method, the choice of sampling item depends exclusively on the judgment of the investigator. यानी कि investigator अपने judgment के हिसाब से क्या उसने item include करनी है ना, उसको sample में
इंक्लूड करता है. For example, an investigator is conducting an opinion poll to ascertain the view of students in regard of introduction of casual dress in the school. The investigator may select 50 students who, in his opinion, are too representative of the population of 1500 students. अब इन्वेस्टिगेटर ने अपनी जजमेंट के हिसाब से 50 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जो उसको लग रहा था कि हाँ, they are the representative of the total population of the 1500 students of the school. He may be wrong. Fine. So the other two methods, that is quota sampling and convenience sampling, will be discussed in the next part of the video. I hope all the methods which we have discussed today are clear to all of you. If you have any query, you can drop your query or question related to the methods discussed on the number stated below in the slide. Thank you all. Thank you very much.